email, audio, video, conferencing. So let's start. So first of all, in the basics of internet, let's understand the term internet is a worldwide telecommunication system that provides connectivity of millions of others. Like with the help of internet, हम लोग आपस में कनेक्टेड हैं. हर एक चीज जो है इंटरनेट के थ्रू ही हम एक्सेस कर पा रहे हैं. चाहे लाइक कोविड के वजह से जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, सो ये सब चीजें विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ही हो पाई हैं. सो इट अलाउज कंप्यूटर यूजर्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर अक्रॉस डिस्टेंस. चाहे इसमें जो जो टूल्स आ सकते हैं, दैट इज द आईसीटी बेस्ड डिवाइसेस सच एज मोबाइल, टैब और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. So internet began in 1969. So you have to remember this year for your exam. And as the US Department of Defense, एक प्रोजेक्ट था दैट इज ARPA, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी. ये एक एजेंसी है जिन्होंने क्या किया था, इसको स्टार्ट किया था. सो वर्ल्ड वाइड वेब, यूजुअली कॉल्ड द वेब फॉर शॉर्ट, is a collection of different websites you can access through the internet. That means आपको कोई भी वेबसाइट जब एक्सेस करना है, so you have to write ना like www.google.com. So for this is the world wide web, www stands for. Then another term is ISP, that is internet service provider. So it offers a variety of services for a variety of prices, like web page access, email, web page hosting, etc. Next, a small term is browser. See, browser क्यों important है? Like अगर मेरी मशीन पे ब्राउजर नहीं है, so मैं कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं कर सकती. एंड ब्राउजर के जो एग्जांपल्स हैं, दैट आर इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो प्री इंस्टॉल्ड होता है आपके लैपटॉप पे या आपकी मशीन पर. ब्राउजर एक फ्री सॉफ्टवेयर पैकेज है जिससे आप क्या कर सकते हो, दैट विल हेल्प यू टू व्यू वेब पेजेस, देख सकते हो कुछ भी ग्राफिक्स लाइक वीडियोस देख सकते हैं, मोस्ट ऑनलाइन कंटेंट. सो इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे कि क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी. देन वेब ब्राउजर की हमने बात की. अब है हमारे पास वेब पेज. वेब पेज क्या है? जो आपको ब्राउजर पे दिखेगा, व्हाट यू सी इन योर ब्राउजर व्हेन यू आर ऑन द इंटरनेट. सो वेब पेजेस लाइक क्या हुआ, एक वेबसाइट है उसमें मल्टीपल वेब पेजेस हो सकते हैं. हो सकता है किसी वेब पेज में इमेजेस हो सकता है किसी वेब पेज में टेक्स्ट. नेक्स्ट स्मॉल टर्म इज द URL, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. दीज आर द एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट. जो भी आपकी वेबसाइट है उसका एड्रेस होता है. सो मेनली इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. लाइक द प्रोटोकॉल इज द पोर्शन इन दिस, जो भी हम लिखते हैं, लाइक हम लिखते हैं ना कुछ इस तरह से, लाइक HTTPS. सो हियर इज द प्रोटोकॉल, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड S is for secure link. Here is this. So the host और top level domain, that is हम यूज करते हैं .com, .net, .edu. The most common is the .com or .in, .org. And the file name, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है. लाइक अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, सो मैंने लिखा google.com. Google is the name and the .com is the domain. So domain is जो लास्ट में आपके होता है, like that .com, .in. डोमेन नेम हमेशा यूनिक होता है. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक डोमेन अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, लाइक आपने देखा है कि अगर मेरी वेबसाइट है सपोज abc.com, सो abc.com की कोई अनदर वेबसाइट नहीं हो सकती. नेक्स्ट, दीज आर सम टॉप लेवल डोमेन नेम्स, जिसमें .com जो है बेसिकली कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, .edu फॉर एजुकेशनल, .gov फॉर US गवर्नमेंट, then .int, .net for networking providers, .org for non-profit organizations. So these are some top level domains. Then these are the domains named according to the country codes, like AU for Australia, IN for India, UK for United Kingdom, and US for United States. Now
we have domain name system, that is the DNS. So what is that? See, DNS जो है basically हम यूज करते हैं, it was developed to translate the numerical addresses into words. So internet address has 4 fields with numbers that are separated by the dots. So this type of address is known as IP address. आप देखते हैं like 192.68.72.11 ऐसा कुछ. So वो जो होता है that is the name of IP address. SSL. SSL stands for Secure Socket Layer. So it is a secure encryption protocol. First of all, I want to tell you one thing, that protocol means कि कुछ rules and regulations जो हम apply करते हैं like अपने websites पे, like हम जब website चलाते हैं तो हम लिखते हैं HTTPS, that is one of a kind of protocol, hypertext transfer protocol. Then SSL is a secure encryption web protocol which is used to make data safe, as the name also includes the word secure. Web hosting. Web hosting means like आपने कोई website design किया, website बना लिया, but वो आप post नहीं किया, like बना के आपने अपनी मशीन पे रखा हुआ है, बट जब तक आप पोस्ट नहीं करेंगे, उसका कोई डोमेन नहीं लेंगे, तो बाकी सब यूजर्स उसको देख नहीं पाएंगे. वेब सर्वर. सी, सर्वर और क्लाइंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. सर्वर एक ऐसी मशीन है जहाँ पे बहुत सारा डाटा स्टोर होता है, और क्लाइंट एक ऐसी मशीन है जो डिफरेंट यूजर्स यहाँ से डाटा को एक्सेस करते हैं. सो वेब सर्वर क्या है? इट रेफर्स टू अ स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम. लाइक अब जैसे कोई बैंकिंग अकाउंट की अगर हम बात करें, किसी सेम बैंक में मेरा भी अकाउंट है और किसी और पर्सन का भी अकाउंट है, सो जो उनका सर्वर होगा दैट इज द वेब सर्वर, कि हमारा डाटा एक वेब सर्वर पे सेव है ओवर द नेट. क्योंकि सपोज अगर मैंने कोई ट्रांजेक्शन अंबाला में की और मेरा अकाउंट कहीं और था, तो वहां पर भी वो रिफ्लेक्ट करेगा. सो दैट इज विद द हेल्प ऑफ वेब सर्वर. नॉर्मल सर्वर की हेल्प से ऐसा नहीं हो सकता. Then some more basic terms related to this, that is the hypertext markup language, that is HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language, which is a programming language used for making web pages. One is XML, that is stands for Extensible Markup Language. So you have to remember all these names. So the difference between XML and HTML is that with the help of HTML you can just make static websites, but with XML you can done a lot of dynamic work. And HTML is a combination of HTML and XML. So it stands for Extensible Hypertext Markup Language. Next is HTTP. So HTTP is a protocol. You can say it is a client server protocol which is used to exchange hypertext documents. Now, basics of intranet. So what is that? Intranet is a private network that is contained within an enterprise. So it may consist of many local area networks, that is LAN or WAN. So main purpose of intranet is to share company information and computing resources among employees. Like एक company है मेरी, so within the company जो network use हो रहा है, that is comes under in this category. So today's working environment often means colleagues are no longer present in the same room. So that's why like अगर हम buildings की बात करें, so एक building में ही मुझे network use करना है, so for that we use this term. For larger enterprises, allow users with their intranet to access the public internet through firewall servers. One term is extranet. So it refers to the network within an organization using internet to connect to the outsiders. With the help of internet, जब आप outsider से भी connect होना चाहते हैं, उस term को हम क्या बोलते हैं? Extranet. Now let's understand basics of email. So electronic mail is a method of exchanging messages between people using electronic devices. So it is invented by Ray Tomlinson. This thing I've also tell in the last lecture. So the
first email was done in the 1916 as by mid 1970s. Email stands for electronic mail, that means it will consist of messages which are sent and received using the internet. So we have three webmail providers, that is Yahoo, Microsoft Outlook and Google, that is Gmail. So in email we have these main fields, that is from, date, to, subject, CC, BCC. So let's see what are these. So before understanding this, let's understand the protocols used in the process of email. First is the POP3, that is Post Office Protocol 3. Some protocols for email protocols. Like first we have POP3. In this, it stands for Post Office Protocol 3. It is a simple standardized protocol that allows us to access mailboxes. अगर इंटरनेट पे मुझे मेल अपने एक्सेस करना है, तो ये प्रोटोकॉल है, इसकी हेल्प से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं. देन हमारे पास जो है बेसिकली सेकेंड होता है IMAP, दैट इज इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल. इट इज ऑल्सो अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर द मेल्स टू यूजर्स. और ये जो है ये सपोर्ट करता है दोनों ही, लाइक ऑफलाइन भी और ऑनलाइन मोड्स भी, जो भी ईमेल्स की होती है. नेक्स्ट होता है SMTP. ये मेन होता है हमारा, और नेम से ही जैसे है, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इट इज अ सिंपल टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड like to send the mail, or you can say it is a mail. It is a protocol that can only be used to send mails. तो ये प्रोटोकॉल ऐसा है जो मेल सेंडिंग के लिए यूज किया जाता है, एज द नेम्स. नेक्स्ट इज as we have discussed the basics of email, that is from, date, to, subject, CC. So what are these things? So first of all, this is the important part, as 3 questions were asked on this in last 2 exams. So first is the BCC, stands for blind carbon copy. So you have to learn the full form of this, and for what purpose it is used. Like when you send an email to only one person, you type the address in 2 fields, and when you send a message to more than one person, you have the option to enter in CC and BCC fields. So BCC is blind carbon copy and CC is carbon copy. So CC message is an email that is copied to one or more recipients. Blind carbon copying is a useful way to let others see an email you sent without the main recipient. So it is faster than sending the original messages and then forwarding the sent messages to the other recipients. So next we have basics of audio and video conferencing. So when a number of participants of a meeting use telephonic instruments to communicate with each other, then it is known as audio conferencing. And when 2 or more people use digital platforms for communication, collaborate with each other for achieving a task or for achieving a common goal, then it is known as video conferencing mode of communication, or you can say face to face. क्योंकि इसमें हमें हमारी वीडियो भी प्रेजेंट हो रही होती है, वीडियो भी हमें शो हो रही होती है, फोटोज दिख रही होती है. So that's why it is called face to face conferencing. So there are many online tools for this. Most popular video conferencing softwares are Skype, Zoom, Cisco WebEx, Go Meeting, Zoho, Workplace by Facebook. So these are some examples for video conferencing software. So first question is about, that is, which of the following is not a web browser? So web browser is what, जो हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है अपनी वेबसाइट चलाने का. So Internet Explorer, Mozilla and Chrome, these are the main web browsers, but Yahoo is not a web browser. So which of the following is a type of malware intentionally inserted into a software system?
इंटेंशनली मीन जानबूझ के जो लाइक प्रॉब्लम क्रिएट करे, मालवेयर होता है जो आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करे. सो लॉजिक बम इज द एग्जांपल ऑफ दैट. इट इज अ पीस ऑफ कोड that is intentionally inserted into a software system that will set off a malicious function. So for example, a programmer may hide a piece of code like किसी ने मेरी मशीन पे एक ऐसा कोड डाल दिया जिससे कुछ फाइल्स डिलीट होनी स्टार्ट हो जाए, तो वो किसी ने इंटेंशनली किया, जिसको हम लॉजिक बम बोलते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप. इंस्टेंट मीन्स कि लाइक साथ के साथ आपके मैसेजेस जो है वो डिलीवर होते हैं. व्हाट्सएप, गूगल टॉक, वाइबर, तीनों ही ऐसे हैं कि जिनसे आपकी जो इंस्टेंट मैसेजिंग होती है. सो आंसर इज 4, दैट इज ABC. नेक्स्ट, एन असिलेक्टेड ईमेल मैसेज सेंड टू मेनी रेसिपिएंट्स. जैसे आपने देखा कि सेम मैसेज बहुत सारे पर्सन्स को जाता है जो रिलेवेंट नहीं है या आपकी मशीन को नुकसान पहुंचा सकता है. वो कहाँ पे होता है? स्पैम में. नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ वेब पेज एड्रेस. सो वेब पेज एड्रेस की हमने बात की थी, वो URL होता है, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज यूज्ड फॉर profit businesses. So for business purposes, I have told you that .com domains are used. So these are some questions related to this particular part.